माइस का आगाज़ यहाँ पर 2014 डिवास्टेटिंग फ्लड्स के बाद किया गया था और उसमें यहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रिवाइव टूरिज़्म को यहाँ पर करने के लिए माइस का जो इनिशिएटिव लिया गया था और उसमें यहाँ पर इंसेंटिव्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के जो फंक्शंस या सेमिनार्स जो है वो यहाँ पर किए जा रहे थे ताकि यहाँ पर फिर से टूरिज़्म सेक्टर को रिवाइव किया जाए। उसी के चलते यहाँ पर ये इनिशिएटिव अभी भी यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर करीब करीब 150 जो बाकी स्टेटों से आया हुआ ग्रुप जो माइस के थ्रू है वो यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। देखिए, माइस टूरिज़्म जो है एक बहुत बड़ा नीश टूरिज़्म प्रोडक्ट है जिसमें कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म, हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, एग्जीबिशंस की बात करते हैं और इसमें बहुत ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। अभी रिसेंटली दिल्ली में हमारी माइस बोर्ड की मीटिंग भी हुई मिनिस्ट्री की, जिसका मैं एक मेंबर हूँ और कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ पे माइस टूरिज़म जो है उसको बढ़ावा दें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि कई माइस ग्रुप्स जो हैं, कॉन्फ्रेंस टूरिज़म के ग्रुप्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो यहाँ आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और अपनी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ जो होल्ड हैं वो कर रहे हैं। जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, आपने देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जो ऑनलाइन ट्रैवल ग्रुप्स हैं या हमारे यहाँ के ट्रैवल के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी इसमें काम करना उन्होंने शुरू किया है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले साल टूरिज़म जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा चला। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉम सेवरल कॉरपोरेट्स, कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग किस्म की, चाहे वो ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस हों, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस हों, अलग अलग कॉरपोरेट्स की बिजनेसेस की कॉन्फ्रेंसेस हों, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको भी उनमें भी बहुत पोटेंशियल है और उस को भी हम टैप कर पाएँ और यहाँ ला पाएँ। हमारे यहाँ बहुत जम्मू और कश्मीर में भी बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, माइस की फैसिलिटीज़ हैं। माइस टूरिज़म इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्फ्रेंस हॉल, इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस। आपने देखा ये जो अभी ग्रुप आया है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स दैट हैज़ कम। इससे पहले भी 5-6 ग्रुप्स और आ चुके हैं। आगे हमारी कोशिश है कि हम टाई अप कर रहे हैं, जो हमारे आउटसाइड ट्रैवल एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे माइस एजेंट्स हैं जो माइस टूरिज़म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे अभी आपने ये ग्रुप मेक माई ट्रिप के साथ देखा, जिनके साथ हमारे लोकल ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो भी एसोसिएटेड हैं। उनके साथ हम बात कर रहे हैं। हमने कई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी अटेंड की। ट्रैवल ट्रेड मार्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। अभी हमारा इस वक्त आज की डेट में अहमदाबाद में ट्रैवल ट्रेड मार्ट चल रहा है। 2 दिन पहले सूरत में था, उससे पहले वी वर इन हैदराबाद, उससे पहले वी वर इन कैलकटा। और जो हमारे ट्रैवल मार्ट्स और रोड शोज़ हैं, और वहाँ पे भी हम जाके कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग लोगों के पास जाएं, कॉरपोरेट्स को इनकरेज करें कि यहाँ आएँ और उनके लिए, उनके साथ हम उनको यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के साथ साथ एक हैंड होल्डिंग भी करें, जो बेसिक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको प्रोवाइड कर सकें और उसके साथ साथ माइस टूरिज़म के लिए एक वंडरफुल एक्सपीरियंस जो है वो भी हम प्रोवाइड कर सकें। ये अब जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको कहा, वी हैव ट्रिमेंडस पोटेंशियल। कई ऐसे टूरिज़म प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वेडिंग डेस्टिनेशन भी एक है। हमने कई एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ लोग आके इस ब्यूटीफुल लोकेल्स में, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स में, इन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दे विल बी एबल टू कम एंड हैव देयर वेडिंग्स हेयर। उसको भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वी वर रिसेंटली इन बॉम्बे एंड वी हैड अ वेडिंग फेस्टिवल, वेडिंग डेस्टिनेशन दिस मार्ट देयर ऑल्सो, जहाँ हमने अलग अलग स्टेक होल्डर से बात की। वेडिंग के अलावा कई ऐसे यहाँ टूरिज़म प्रोडक्ट्स हैं। हम अगर गोल्फ़ की बात करें कि एक नीश प्रोडक्ट है जिसमें गोल्फिंग टूरिस्ट जो है इज़ अ स्पेंडिंग टूरिस्ट। इस बार हमारा अभी अगले हफ्ते 7 तारीख से PGTI का गोल्फ़ टूर्नामेंट जम्मू में होने जा रहा है, विच इज़ द प्रोफेशनल गोल्फ़ टूर्नामेंट, जिसमें मोर दैन 120 गोल्फर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग। 120 प्रोफेशनल गोल्फर्स हु हैव बीन ओलंपियंस, हु हैव प्लेड वेरियस टूर्स, चाहे वो यूरोपियन टूर हो, चाहे वो एशियन टूर हो, और विनर्स भी रह चुके हैं। और इंडिया के जो टॉप गोल्फर्स हैं वो आ रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे। पिछले बार हमने ये रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में किया था, इस बार ये जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में हो रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ पे एक और टूरिज़म का नीश टूरिज़म का जो है प्रोडक्ट है, दैट इज़ बर्ड वॉचिंग। हम एक नेचर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिल के एक एनुअल बर्ड वॉचिंग इवेंट, ताकि दैट इटसेल्फ बिकम्स एन इवेंट एंड बर्ड वॉचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो कम एंड विजिट। इसके अलावा एक बर्डिंग सर्किट जो है हम अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिल के उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सिमिलरली देयर आर सम अदर प्रोडक्ट्स लाइक एंगलिंग। अभी आपने देखा कि रिसेंटली हमने अपने जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट करने
की बहुत कोशिश की, विच हैज़ रियली हेल्प्ड। ये जो हमारा इतना टूरिज़्म बढ़ा है उसका ये रीज़न भी है कि देयर आर पीपल हैव मैनी मोर ऑप्शंस, मैनी मोर थिंग्स टू डू, देयर एक्सपीरियंस हैव बीन एनहांस्ड, दे कैन कम एंड डू मैनी थिंग्स, दे कैन कम एंड स्टे लॉन्गर। 75 डेस्टिनेशंस जो हमने आइडेंटिफाई की हैं थ्रू आउट द यूटी, जिसमें से 38 कश्मीर डिवीज़न में, 37 जम्मू डिवीज़न में है। आपने रिसेंटली कई इवेंट्स भी देखे होंगे। गुरेज was declared as the best offbeat destination in the country. I must congratulate the Directorate of Tourism and also all the tourism players और जो गुरेज के लोग हैं और ख़ासकर वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोऑपरेटिंग इन दिस। हम बॉर्डर टूरिज़म फेस्टिवल जो है हमारा कल है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉर्डर टूरिज़म को भी बढ़ावा दें। टीटवाल में और टंगडार में बॉर्डर टूरिज़म फेस्टिवल है विच इज़ स्टार्टिंग टुमारो, जिसमें टीटवाल में मोर देन 40 होम स्टेज़ विल ऑल्सो भी इनाग्रेटेड। आपने देखा कि उससे पहले हमने मानसबल में कुछ होम स्टेज़ को इनाग्रेट किया। हमारी कोशिश है, हमने रिसेंटली होम स्टे पॉलिसी जो है वो भी गाइडलाइंस भी अभी रिसेंटली रिलीज़ की हैं बोथ इन जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर डिवीज़न, कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ासकर ये जो हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ हम लोगों को एनकरेज करें कि वो होम स्टे सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि पीपल हु कम एंड विजिट दे कैन हैव अ लोकल एक्सपीरियंस, दे कैन स्टे विद द फैमिली, दे कैन ट्रूली एक्सपीरियंस लाइफ इन दोज प्लेसेस। और ख़ासकर इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। बेनिफिट ऑफ टूरिज़म जस्ट should go down to the last person and that is the endeavor जो टूरिज़म डिपार्टमेंट कर रहा है। कई और ऐसे हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है टूरिस्ट का उसको हम एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वी आर स्टार्टिंग द सिटी हेरिटेज टूर, श्रीनगर सिटी का जो हमारी हेरिटेज है, हमारी श्राइन्स हैं, हमारे टेम्पल्स हैं, और जो डाउनटाउन का एक्सपीरियंस है, डाउनटाउन लेगेसी टूर जो है वो भी अगले एक हफ्ते में लॉन्च होने जा रहा है। सर्विसेज आर इम्प्रूव्ड। इसी तरह आपने फ़िल्म टूरिज़म की बात पिछली बार सुनी कि फ़िल्म टूरिज़म के लिए भी J&K UT came out with a film policy which is perhaps the best film policy in the country. Several initiatives have been taken जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ फेस्टिवल्स को, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सीजन्स को, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी ब्यूटी को और ख़ासकर यहाँ के एक्सपीरियंसेस को। आई थिंक दिस हैज़ बीन ग्रेटली बेनिफिशियल। आई मस्ट कंग्रेचुलेट द एंटायर ट्रैवल ट्रेड कि उनका हमारे साथ रहा है यहाँ भी और जम्मू डिवीज़न में भी, और सबके साथ मिल के हम चल रहे हैं। आई एम श्योर दैट इफ़ वी कंटिन्यू विद दिस एफर्ट, जो हमारा जॉइंट कंसर्टेड एफर्ट है, we will make huge progress. My name is Sameer Ahmed Bakhtu. I am a travel agent by profession, and we have a MICE group today here, which has come all the way from different parts of India. So MICE is a different segment of tourism, which includes meetings, incentives, conferences and exhibitions. So that's what MICE stands for. And as far as MICE is concerned, Kashmir has a great potential for MICE. In 2019, we've had a conference in Kashmir where we had more than 800 delegates which came from rest of India, and it was one of the biggest ever MICE conferences held in Kashmir. And this time, after the pandemic, we have had this is, I would say, one of the biggest MICE groups that we have currently, which is around 150 delegates which have come over. Regarding the potential, Kashmir has a great potential of MICE tourism. We have got hotels like Taj, Lalit, and even the Marriott's is coming up. Even Mushtaq group of hotels are coming up with a very big property in Srinagar. Even at Gulmarg, we have Khyber. We have other properties even coming up. ITDC is also coming up with a property in Gulmarg, so which gives a good room to the rest of the world, I would say, to choose Kashmir as a MICE tourism destination. See, MICE tourism has already there's the potential. All we need to do is just blend it up with one window clearance. Let's say there's a MICE group coming. If we have one window clearance for other activities like gondola, we have a clearance for shooting the MICE groups or exhibitions conducting. That will make it more easier. Even when we go to Gulmarg, like we were given full protocol right now by the Department of Tourism. Even Gulmarg Gondola authorities were very supportive. Even the local police was supportive. So these are the things that we need to put emphasis on, and of course more, bigger exhibition halls needs to be. We should come up with bigger conference hall, hotels with more than 200, 300 rooms needs to be. These initiatives need to be welcomed. Absolutely. You are working for that? So destination Kashmir is an ultimate place for
destination weddings, and when you compare Kashmir with the rest of India, it's compared to none, because the beauty we have around snow-capped mountains in winters. In summers, you have very beautiful lakes. Houseboats indeed are one of the most attractive things for destination wedding. Not probably you will have wedding there, but pre-wedding shoots, post-wedding shoots, all these happens in Kashmir. And you can literally compare Kashmir with Europe and other places in terms of in terms of the climate, in terms of the beauty. So of course, wedding, like destination wedding, is also another segment that we should promote. Absolutely, we're working neck to neck with the Department of Tourism, but again, we would request the authorities to give us single window clearance. That is what is important. See, MICE is, as I told you before as well. Apart from conferences, meetings, and other things. So MICE is all about conferences, meetings, and exhibitions. Then we have another segment of tourism that is destination wedding that has a great potential. Big Indian fat weddings. They spend crores of rupees to come in and celebrate a wedding out here. Then we have a great potential for leisure tourism, adventure tourism. Nobody can compare us in adventure tourism. So Kashmir is a complete package. You know, we do not have one small segment of tourism which we can host. We can host all the segments of tourism, and we are well versed with the Almighty. We have mountains. We have everything for all the segments of tourism. We would request the rest of the world to come in, try Kashmir. We can cater for MICE, we can cater for leisure, we can cater for adventure tourism, we can cater for all other segments of tourism. And definitely the government of Jammu and Kashmir, especially the Department of Tourism, is warm welcoming. They can help us out to plan our holidays and give us an ease of completing your trip and have a happy ending for all your trips. And Kashmir is something, we have a slogan for Kashmir: once is never enough. If you come to Kashmir once, you have to come back again, because you cannot explore Kashmir completely in just one trip. Hi, my name is Nitika. I'm from Delhi, and it is my first time in Kashmir. And I've always heard that it's a beautiful place. One should always be there, like at least once in a life. So I finally thought of coming here, and I loved it. And the beauty, the serenity that you get here, it's absolutely brilliant. Also, the kind of things that we got to see, like I mean, I've had an ATV ride or something like before, but today the kind of experience that I've had was beautiful. They were extremely cooperative, and the crew and everyone associated with us was highly cooperative. And then we had gondola rides, and gondola ride was again fun. And I think we were easily accessible to the gondola rides, but because I think that nobody can take their cars or something to that place, but still it was made accessible to us, so we are highly thankful. Well, it's peaceful. Honestly, I'm from Delhi, but then you don't find peace in Delhi. Exactly. It is the paradise of the world, I guess. I don't think so we ever need to go out of India to shoot or something. You can have the beautiful and the best location in Kashmir. So I think whosoever... in Kashmir, I feel Gulmarg. Gulmarg was extremely beautiful. And I think one should just have a look at Kashmir. And because I've traveled entire world, but I feel when it comes to Kashmir, it's the most beautiful thing. So I think one should definitely try and be here. And as soon as you can, if you've not been to Kashmir, please, please, please come and fall in love with this beautiful state. It's like a paradise on earth. And you don't need to go out of India. Well, when it comes to tourism, people are, I think, quite known to, the beauty of Kashmir, but they've not seen it. But the way we were made to see Kashmir, the kind of, convenience that was provided to us was, I think, extremely helpful. And I think tomorrow, if anybody wants to plan and be here, I think they should reach you guys, and, you'll make it... They'll make Kashmir actually beautiful for you. It already is, but then if you really want to have a good, better experience, I think you should be here with these people. So I would say, come here, see it yourself. If you don't like it, that's okay, but you'll definitely love it, because it's actually worth coming here. I've traveled everywhere, but
this place, this city, this country, this state, I think it's very beautiful, and you all should come as soon as you can. Yeah, I am Sonam Jain and we are really enjoying every bit of it. नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ, लेकिन अब के थ्रू नहीं, उसके थ्रू हम पहली बार ही आए हैं। और जब हम पहले आए थे तब उस टाइम पे इतना डर नहीं था शायद, लेकिन अब की बार जब भी हम लोगों ने बताया घर में तो पीपल वर लिटिल स्केयर्ड, पर यहाँ आकर इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से लोग स्केप्टिकल हो रहे हैं कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए। नहीं, कश्मीर टूरिज़्म के लिए ज़रूरत लोगों की अवेयरनेस की है। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, सपोर्ट पूरा है। यहाँ पर जो स्टाफ, जितना भी हम लोगों के एशियन पेंट्स वालों ने स्टाफ पूरा अरेंज कर रखा था, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कन्वेंशंस वगैरह यहाँ पर करना इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड नेक्स्ट लेवल। आपकी कन्वेंशंस या आपकी जो भी आपका मीटिंग्स वगैरह हैं, यू कैन एनी हाउ हेल्ड इट। और लोगों के दिमाग में है कि यहाँ पर कुछ अनईजीनेस है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव बीन टू मार्केट ऑल्सो, पूरी मार्केट में पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव। हमारा कैब ड्राइवर वॉज सो कोऑपरेटिव। कितने 2-3-4 लोगों से तो कैब ड्राइवर से हम मिले, यहाँ पे लोकल से हम लोगों ने बात करी। देयर इज़ नथिंग लाइक एनी अनईजीनेस और समथिंग। हम लोगों का ये शॉर्ट ट्रिप है, तो हम लोग अभी तो गुलमर्ग और वहीं पर गए हैं। या श्रीनगर में हमने पूरा एक्सप्लोर किया, बिकॉज आज हम लोग थोड़ा सा फ्री थे तो हमने पूरा एक्सप्लोर किया उसको। तो हम लाल चौक भी गए, वी वेंट टू सम अदर डेस्टिनेशन, खैबर चौक भी गए हम लोग, खयाम चौक सॉरी। एंड तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी, डल लेक और वो तो है ही है। मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर को किसी चीज़ की ज़रूरत है या कश्मीर के लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है। अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो बाकी लोगों को ज़रूरत है कि वो यहाँ आएँ और करें। इट्स सो ब्यूटीफुल। पीपल आर मिसिंग। अगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं तो वो मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। कश्मीर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बिल्कुल टूरिज़्म जो है वो बढ़ाना चाहिए और टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अभी भी जो कनक्योर्ड डेस्टिनेशंस है उनको कनक्योर करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये स्वर्ग है और ये मुकुट है, लेकिन इस मुकुट को और सजाने की ज़रूरत है और टूरिज़्म सेक्टर को और भी कुछ इसमें इकदाम उठाने की ज़रूरत है। फिरदौस लाई, जाननवानी, JK न्यूज़ टुडे श्रीनगर।